Carl Pearson product moment method, we used to compare two variables x and y, and these variables were numbers. They were basically quantitative data. What is quantitative data? Which we can measure. Now, whenever quantitative data is not there and it's a qualitative data, जैसे कि what are qualitative data? Age is qualitative? क्या quality है आपकी उम्र का ऐसा? Oh, very good. Intelligence. Okay, can I say intelligence? Some talent, some skills, which is very relative. Acting. Who is the best actor in this world? Everyone has their own choice, isn't it? It cannot be measured. But which cricketer scored the highest number of runs? वो हम कर सकते हैं ना measure, because runs is there. Okay. Who is the most talented cricketer? अब ये quantitative नहीं है, वो qualitative है. Talent, how we can measure? वो किलो के भाव पे मिलता नहीं है. So in such cases, we do not go for Carl Pearson product moment method. We go for Charles Spearman rank correlation. Okay, very simple formula. Come in exam for 2 to 3 marks. Write the formula. And you also mention used for qualitative data. R is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n, n square minus 1. Now what is d? D is equal to, ध्यान दो, say for example there are two variables x and y. Okay, x में values है, y में values है. हम फाइंड करते हैं रैंक ऑफ x एंड रैंक ऑफ y. जिसको रैंक सबसे ज्यादा मिलेगा, जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको. ओके, सो इट विल बी हाईएस्ट गेटिंग द फर्स्ट रैंक एंड लोएस्ट गेटिंग द लास्ट रैंक. सो रैंक ऑफ x एंड रैंक ऑफ y. देन वी फाइंड आउट d, which is equal to rank of x minus rank of y. So d over here is rank of x minus rank of y. Understood this? You have to just remember this. So what is d square? इसका square. So you will have the columns x, y, rank of x, rank of y, d, and d square. Got it? Can d square be negative? But d can be negative. Yes. But d square will never be negative. Is this clear? Okay. So sigma d square. So d square का total is sigma d square. 6 into sigma d square upon n. You know what is n? Number of observations. That's it. Very simple. लिख लो. Page number 99. Question number 1. 6 companies are ranked by 2 market analysts on the basis of their growth in recent past. Now companies are given. What is given in the next column? Rank is given. You know, already rank of x and rank of y is given. So we directly write down rank analyst 1, analyst 2. So this is x, rank of x and rank of y. D is equal to rank of x minus rank of y directly, and then find out d square. Can you do the sum? Okay. -1, -2, -2, 2,
2, and 1. 1, 4, 4, 4, 4, 8. So, rank correlation. R is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n square minus 1. If you're not confident, use this brackets. 1 minus 6 into 18. It is what? You count 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 36 minus 1, which is 35. So 1 minus 6 into 18 upon 6 into 35. 4 something. Zero point. What is this? Therefore, rank correlation coefficient equal to 0.49. Can come for 2 or 3 marks. Extremely easy. Yes. Okay, do the second sum on your own. The following info is obtained by taking a sample of 10 students from the students of a science college. Now, what you can see over here is marks are given. Based on marks, what we have to find out, find the rank correlation coefficient between the ability of the students in the subject of maths and stats. So because it is ability, which is, can I say, a qualitative data, so हम क्या करेंगे? We have x and y in numbers. We will convert these numbers into ranks. Is this clear? And then once we get the ranks, we'll find out d and d square. Okay, let's first write the numbers. Marks. Maths. Take as xi. And stats. Y. Repetition is not there, okay? Be careful, we can repeat to nahi hai, because then the formula changes. We'll do that next. 47, 53, 58, 86, 62, 68, 60, 91, 51 and 84. Should we give ranks now? Okay. Rank of x. Now, which is the highest? 98. 98 को मिलेगा first rank. Then which is the next one? 98 के बाद 90 second. Then 80, 82. 91 है इधर. वो तो इधर है. Okay. Now 90. Then next is 82. Then next is 78. Fourth rank. 75. Fifth rank. Then 65. Sixth rank.
7th rank, and then 39, 8th rank, and then 36, 9th rank, and 25, 10th rank. All of you got it? Okay. Rank of Y, खुद दो. Give the ranks on your own, then we'll verify. कौन जे भाई? Okay. Is it 10, 8, 7, 2, 5, 4, 6, 1, 9, 3? Yes. Got it, all of you? Yes. Same ranks? Yes. Rank देने में तो कोई problem नहीं है ना? Okay. Now, D is equal to rank of X minus rank of Y, and then D square. Zero point 18. Write the final answer. हो गया सबका? Okay, I want you to do question number 5. Very interesting. क्या करेंगे हम? See, tie होता है. Can I say it's a tie of observation? याद है, when you give ranks, you start with the first rank, second rank, now third आ गए. तो नॉर्मली स्कूल में दे कैन फॉलो द प्रैक्टिस की थर्ड दे दिया, ऐसा ही होता है ना. एंड देन फिर फोर्थ नहीं दिया. कितने स्कूल में ऐसा है, दे डोंट गिव द फोर्थ रैंक. अदरवाइज 50 स्टूडेंट है तो रैंक्स हो जाएंगे 51. यू अंडरस्टूड दिस? ओके, बिकॉज़ यू आर गिविंग मल्टीपल सेम रैंक टू मल्टीपल स्टूडेंट्स. नाउ यहाँ पे इन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हेनेवर देयर आर रिपीट्स, वी विल not give equal rank, like we will not give 3 3 4 4 5 5 6 6 6. Okay, what we will do is जो भी number of rank में tie है, okay, say for example there is a tie between third and the third rank, so there are 2 ranks in tie, third and fourth होना चाहिए, but है third and third. So what we will do, we will take third rank, okay, and the fourth rank, दोनों में टाई है ना, हो गया third and third. So third rank and the fourth rank divide by 2. So this person will get 3.5th rank and the other person will also get 3.5th rank. You understood this? नहीं पता चला? See, तुम्हारा third rank है. Say your marks are 80%. You're getting the third rank. एक similar student का भी rank, तो सिमिलर स्टूडेंट का भी 80% है, पता चला? तो थर्ड रैंक दोनों को मिलना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली थर्ड और फोर्थ के बीच में टाई है,
वो दो स्टूडेंट के बीच में टाई हो गया, सो दोनों को या थर्ड रैंक दो, जो हम नॉर्मल स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं. बट इन स्टैटिस्टिक्स इन दिस मेथड व्हाट वी विल डू इज थर्ड रैंक प्लस फोर्थ रैंक डिवाइड बाय 2 will be given to both the candidates. Now you understood this? Okay, let me give you one more condition. Let's say 3 लोगों में टाई है, थर्ड रैंक वाले के लिए, थर्ड पोजीशन के लिए 3 लोग हैं. So it is basically third, fourth and fifth. तो हम क्या करेंगे? 3 plus 4 plus 5 divide by 3. Now not 2, divide by 3. So what rank you will give is 4, 4 and 4. You understood this? समझ में आया? Now, यानी रैंक में टाई कहाँ हुआ? थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक एंड द फिफ्थ रैंक. सो 4, 4, 4 के बाद नेक्स्ट रैंक क्या आएगा? सिक्स्थ रैंक. You understood this? Okay. Now you write the question. Write the question. I'll make you understand the rank, and then we will write the new formula over here. लिखो question. Question 5, and mark it important because type observations. Height. Rank. Now tie कहाँ पे है? यहाँ पे tie है ना? यहाँ पे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ के नॉर्मल रैंक्स दे दो. This is the highest. 91, 1, 85, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now rank of y में ध्यान देना. Rank of y यहाँ तक हो गया सबका. Now which is the highest? 170. First one. So no problem with 170. Student getting 170. Or height of y 170 centimeter. Then next is 162 and 162. दो में प्रॉब्लम है. तो कौन से रैंक में टाई हुआ? सेकेंड रैंक एंड द थर्ड रैंक. You understood this? So what rank you will give over here is 2.5 and 2.5. समझ में आया? 2.5 2.5 पता चला. ओके, सो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया. नेक्स्ट क्या आएगा? फोर्थ 157. सो ये आ गया 4. देन फिफ्थ और सिक्स्थ में भी टाइप क्या आएगा? 5.5 and 5.5. And then what is left? 7. You understood this? Okay. Now you find out d and find out d square and then come to the formula 8. Find out 8 minus 0.5. 0.5 and 0.5. So what is sigma? M cube minus m upon 12, which is equal to 1. Therefore, CF is also equal to 1. You understood this now?
Okay, ये formula पेज पे लिख लो. Then you come to the sum. You write this table. 0.93. Page number 100, question number 8. Are all of you on this question? Now, the coefficient of rank correlation of marks obtained by 10 students in two particular subjects was found to be 0.5. So, what's the information given is n is equal to 10, r is equal to 0.5. Later on, it was found that one of the differences of the rank of a student was 7, but it was taken as 3. So what wrong difference was taken? Wrong difference 3 and correct difference 7. अच्छा, what is this difference is equal to? ये difference क्या है? Rank of x minus rank of y. So it is rank of x minus rank of y. Now formula is 1 minus 6 sigma d square upon n square minus 1. Isn't it? Now यहाँ पे d गलत है तो d square भी गलत है. You understood this? So let's first find out what is the wrong sigma d square. You understood this? समझ में आया सबको? नहीं? Okay, very good. Now पहले हम फाइंड करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर गलत क्या है. ओके, फिर उसमें से जो गलत है उसको निकाल देंगे, जो करेक्ट है उसको इंक्लूड कर देंगे, तो करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर मिल जाएगा. Once you get the correct sigma d square, you will find the correct value of r. Is this clear, all of you? Now, let's do that first. 0.5 is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n. सबको पता है ये 10 square minus 1. Therefore, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, so negative हो जाएगा. समझ में आया ये? 1 जो यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव. सो माइनस 0.5 इज इक्वल टू माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर, सो इनटू 99. माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई. देयरफॉर sigma d square is equal to 0.5 into 10 into 99 upon 6. ऐसे क्या सकते हैं? Is equal to how much? 82.5. Therefore, wrong sigma d square is equal to 82.5. Should I wait? You are doing this or you do once it is over? Over. So ध्यान दो, लिखना बंद करो तो फिर. Now, फिर से एक बार. What is given is n is given, r is given. So n is given, r is given. 1 और 6 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. We have to first find out wrong sigma d square. कैसे फाइंड करेंगे? ये सब लिख देंगे यहाँ पे. ये यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और यू कैन टेक दिस ओवर हियर एंड दिस ओवर हियर, इट्स द सेम थिंग. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट यू गेट इज रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर, यानी डी जो रॉन्ग है उसका फिर डी स्क्वायर भी रॉन्ग हो गया. अब रॉन्ग डिफरेंस क्या था? 3, तो उसका क्या होगा? हो गया 9. यू अंडरस्टूड दिस? तो करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर में रॉन्ग जो है उसमें से क्या माइनस करेंगे? 3 करेंगे या 9? और प्लस क्या करेंगे? आना क्या चाहिए था? 7 and 49. Is this clear, all of you?
So plus करेंगे 49. How much? 40. So 122.5. Can you now find the correct R? All of you understood this? फिर से एक बार. Now, question समझ में आया? हमने क्या किया? ये जो है ना, यहाँ पे लेना चाहिए था 7, but ले लिया 3. ऐसा दिया है क्वेश्चन में. क्वेश्चन पढ़ लो फिर से एक बार. One of the difference of rank of a student was 7, but it was taken as 3. You understood? Difference 7 था, हमने लिया 3. तो ये जो सिग्मा टी स्क्वायर आया, उसके अंदर ये गलत आ गया. तो पहले में फाइंड करना पड़ेगा कि सिग्मा डी स्क्वायर रॉन्ग क्या है. अब पता चला. तो the moment we found wrong sigma d square, हमने उसमें से ये गलत को निकाल दिया और करेक्ट को ऐड कर. ये आ गया सबका. Now can you find the correct rank? Okay, so we say correct r is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n square minus 1. R is equal to 1 minus 6 into 122.5 upon 10 into 99.